Let us see the next question. On 1st of January, a situation as under is prevailing. Spot exchange rate is 70 rupees per dollar. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है रूपी करेंसी का, डॉलर करेंसी का। एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है और हमको एक साल टाइम पीरियड और एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है। दो क्वेश्चंस पूछे। मिस्टर अमिताभ बच्चन believes that in above situation an opportunity of arbitrage exists, so he enters into the transaction for borrow rupees and invest in dollar. Calculate the profit or loss that he is likely to make in this case. Mrs. Amitabh Bachchan believes that, वो मिसेस अमिताभ बच्चन वाला बाद में पढ़ते हैं। तो अगेन हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है और उसमें ऐसा लग रहा है मिस्टर एबी को दैट से द आर्बिट्रेज का पॉसिबिलिटी है, और जो हमको एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस दे रखा है उसके ऊपर से हमको ये कैलकुलेट करना है दैट से वेदर ही वुड बी एबल टू मेक अ गेन और नॉट। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन पॉइंट ऑफ व्यू, we will be having borrow rupees and invest in dollar, that is a transaction. On 1st of January, Mr. AB will enter into the following transactions. Borrow 70 rupees at the rate of 15% for 1 year. We may assume any other amount also. Spot transaction, conversion of the rupees into dollar. You'll get $1. Invest $1 at the rate of 6% for 1 year. Entered into the forward contract for conversion of the dollar into rupees. In explanation that says this contract is entered upon for conversion of the dollar into rupees. On 31st of December, Mr. AB will have the following position. एक तो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट मिलेगा डॉलर करेंसी में, लायबिलिटी टू मेक रीपेमेंट ऑफ द लोन, holding a forward contract for conversion of the dollar into rupees for repayment of loan. यहाँ तक का से वर्किंग करने के बाद we are required to make the calculation of the profit or loss using the forward exchange rate of 72 rupees per dollar. चलो which paragraph write down? Calculation of profit or loss to Mr. AB. I request all of you to write down answer along with me. रुपीस डॉलर, $1 का 72 रुपीज, सो $1.06 का इतना रुपीस, 72 into 1.06 divided by 1, so 76.32. तो फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड लेस रीपेमेंट ऑफ लोन so that results into loss. ₹4.18. आर्बिट्रेज लॉस नहीं कहा जाता, इसको सिर्फ लॉस कहा जाता है. I request you to take down answer. Second question is, Mrs. Amitabh Bacchan believes that in above situation an opportunity of arbitrage exists, so she enters into the transaction of, highlight the portion, borrow dollar and invest in rupees. Calculate profit or loss that she is likely to make in this case. तो उनको कितना फायदा होगा या नुकसान होगा वो आपको बताने का है. तो ट्रांजैक्शंस ऑफ मिसेस एमी क्या करने वाले हैं? बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपीस. ट्रांजैक्शंस ऑन 1st of January, borrow $1 at 6% for 1 year. We may assume any other amount. Spot transaction, sell dollar and purchase rupees. Conversion of $1 will get rupees 70.
invest 70 rupees at the rate of 15% for 1 year. Importantly, enter into the forward contract. 31 दिसंबर को मिसेस ए बी का ऐसा सिचुएशन होगा. सबसे पहले लायबिलिटी होगा टू मेक रीपेमेंट ऑफ लोन. मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट होगा, दैट इज इन रुपीज टर्म. Then holding a forward contract to convert rupees into dollar at forward exchange rate. Then I done further calculation of profit or loss to Mrs. AB. रुपीस एंड डॉलर. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है क्वेश्चन में 72 रुपीज फॉर डॉलर. हमारे पास मेच्योरिटी कितना है 80.5. दैट इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ डॉलर. 80.5 into 1 divided by 72. 1.1181. This is the maturity, sorry, this is what you are going to receive. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे amount received. $1.1181. और फिर हम लोग लिखेंगे लेस रीपेमेंट. इट इज 1.06. उसका जो डिफरेंस है ना, दैट इज आर्बिट्रेज. 1.1181 minus 1.06, so 0.0581. ऐसा करके हम लोग यहाँ पे आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं. चलो, again my question to all of you is this, that let us say that the spot exchange rate is 70 rupees per dollar. रूपी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%. डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. तो एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या 72 रुपीज पर डॉलर हो सकता है? दैट इज माई क्वेश्चन. प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. फ्रेंड्स, एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ये सिचुएशन में 72 नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विथ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस यू आर एबल टू मेक आर्बिट्रेज. और आर्बिट्रेज क्या बताता है? आर्बिट्रेज ये बताता है कि ऐसा सिचुएशन मार्केट में पॉसिबल नहीं है. दैट इज द रीजन वी अंडरस्टैंड दैट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. एक छोटा सा समरी पूरे क्वेश्चन का. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिस्टर अमिताभ बच्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है दैट से शुड वी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर बोरो रुपीस एंड इन्वेस्ट इन डॉलर. विद दैट से कैन वी मेक द आर्बिट्रेज? दैट इज द क्वेश्चन. तो हमने क्या किया? हमने ऐसा किया दैट से हमने 70 रुपीज बोरो किया एट 15% फॉर 1 ईयर. उसको कन्वर्ट किया डॉलर में, इन्वेस्टमेंट किया डॉलर में, और हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. These are the combination of the transactions in which we have entered upon on 1st of January. At the end of the year, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका हमको मेच्योरिटी मिला, जो भी हमने लोन लिया था उसका हमारा रीपेमेंट होगा, and say we will be having say forward contract for conversion of the dollar into rupees, and with that say we are going to make the repayment of loan. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 72 रुपीज पर डॉलर, यानी $1 का हमको 72 रुपीज मिलेगा. 1.06 डॉलर का हमको 76.32 रुपीज मिलेगा. विद दैट आई विल मेक द रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड दैट इज इनसफिशिएंट, सो देयर इज अ लॉस. ऐसा हम लोग समझते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मिसेस ए बी उन्होंने क्या किया? बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपीज. $1 बोरो किया एट 6% फॉर 1 ईयर. Conversion of the dollar into rupees.
₹70 मिले, जिसको इन्वेस्ट किया और 1 साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर कन्वर्जन ऑफ द रुपीज इनटू डॉलर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हमने डॉलर बोरो किया था उसका रीपेमेंट लगेगा, जो भी हमने मेच्योरिटी अमाउंट दैट इज रुपीज करेंसी में इन्वेस्ट किया था से उसका हमको मेच्योरिटी मिलेगा। नाउ वी आर हैविंग अ दैट इज होल्डिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द रुपीज इनटू डॉलर। सो ₹72 का $1 मिलेगा, तो 80.5 का कितना डॉलर मिलेगा? दिस इज द अमाउंट ऑफ द डॉलर। फ्रॉम दैट से यू मेक द रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड विद दैट से वी रिजल्ट इट रिजल्ट्स इनटू आर्बिट्रेज। अगेन ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने का मतलब ये है, अगेन ये कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन में, ये सिचुएशन में 1 साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ₹72 पर डॉलर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, लेट अस नोट फॉर दिस। Learning point of the question is that if spot exchange rate is ₹70 per dollar, comma, rate of interest of rupee currency is 15%, comma, 6% for dollar currency, comma, 1 year forward exchange rate cannot be ₹72 per dollar। क्या होना चाहिए वो समझने का बाकी है। ये सिचुएशन में ये कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन से ही प्रॉफिट क्यों हो सकता है वो भी हमको समझने का बाकी है।